Hello everyone, welcome back to Prime Classes. In the last class, we saw Sridharacharya formula, which is also known as quadratic formula, and we also studied about nature of roots. Okay, so we studied about the quadratic formula, Sridharacharya formula, जिसको हम लोग देते हैं minus b plus minus root d by 2a. Okay, and d, which is known as the discriminant, is given as b square minus 4ac. Now d discriminant, इसका नाम ही discriminant पड़ा हुआ है ऐसे क्यों? क्योंकि दिस डिसाइड्स द नेचर ऑफ रूट्स. ओके, ये रूट्स के नेचर को डिसाइड करता है कि अगर पॉजिटिव आ गया तो दोनों रियल होगा, अगर जीरो आ गया एंड यस पॉजिटिव आ गया तो दोनों रियल एंड दोनों डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे. अगर जीरो आ गया तो दोनों सेम ही होंगे बट हाँ रियल होंगे, और अगर नेगेटिव आ गया तो कोई भी रियल रूट्स नहीं होता है. ओके, सो दिस इज अबाउट द नेचर ऑफ रूट्स, जिसको हम लोग पढ़े. इसको डिटेल्स में जानने के लिए यू कैन वॉच द प्रीवियस वीडियो. नाउ इन दिस वीडियो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, example 8 and 9 and example 8 and 9, which are important questions of this chapter, and practice questions. At last we're going to see some practice questions related to this topic. Okay, so let's start with example 8. A pole has to be erected at a point on the boundary of a circular park of diameter 13 meters in such a way that the differences of its distances from two diametrically opposite fixed gates A and B, this one and this one, on the boundary 7 meters. Is it possible to do so? If yes, at what distance from the two gates should the pole be erected? So basically this is a circular park जिसमें there are two poles in which there are two gates. Okay, now this is the first gate. Let me highlight with the red color. This is the first gate, this is the second gate. ओके, एंड इन दो गेट से ऐसे डिस्टेंस पे एक पोल, पी इज फॉर पोल खड़ा करना है जो ऐसे डिस्टेंस पे होगा कि यहाँ का जो डिस्टेंस है और यहाँ का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम गेट ए एंड डिस्टेंस फ्रॉम गेट बी, दोनों के बीच का डिफरेंस 7 आए. बाई चांस सपोज अगर इसका 20 है तो इसका हो सकता है 27, दोनों के बीच का डिफरेंस 7 है. हाँ, 27 अगर नहीं हुआ तो ये 13 भी हो सकता है. 13 क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस अगेन 7 ही है. सो बेसिकली अगर एक का वैल्यू x लेते हैं हम लोग तो दूसरे का वैल्यू x प्लस 7 ले सकते हैं. क्यों? क्योंकि ऐसे में ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ऐसे में x और x प्लस 7 दोनों के बीच का डिफरेंस 7 ही आएगा. x प्लस 7 की जगह पे x एंड x माइनस 7 भी ले सकते हैं, कोई सा भी केस लेके चल सकते हैं. बट हाँ, वी ऑलवेज ट्राई टू टेक द नंबर्स पॉजिटिवली. ठीक है, पॉजिटिव लेने से हम लोग का कैलकुलेशन इजी हो जाता है. दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू टेक x and x plus 7. So this is gate A, this is gate B, and this is pole. अब ये जो डिस्टेंस है and ये जो डिस्टेंस है, I'm taking this as x and this as x plus 7. क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री पे होगा, है ना. It will form a right angle triangle. So I can use Pythagoras theorem. So let me try. What is Pythagorean theorem? H square is equal to p square plus b square. Okay, what is the value of h? Before that let me consider it properly कि हम लोग कंसिडर करके मान रहे इसको. ओके, let x be the distance of pole p from gate B. Okay, gate B. So distance of pole P from gate A will be x plus 7. okay, x plus 7 हो सकता है. एंड यस, x plus 7 जो है ये हम लोग x minus 7 भी ले सकते हैं. नाउ अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, इट विल बी h square is equal to p square plus b square. What is the value of h, which is given 13 meter? So 13 का square is equal to p का वैल्यू हम इसी को लेके चलते हैं, x plus 7 square plus b का वैल्यू x square. Okay, so 13 का square 169 is equal to x square plus 7 का square 49 plus 2 into x into 7, that will be 14x. And again x square. Okay, so 169, let me take another page.
The equation was 169 is equal to x square plus 49 x square plus 49 plus 14x plus x square plus 14x plus x square. Okay, if I rearrange it, x square plus x square, it will be 2x square plus 14x, यहाँ पे 0 करते हैं, and plus 49 minus 169 माइनस आएगा, and दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा 120. By the way, this equation seems very familiar to me, as we have solved this kind of situation in the last class also, just in the last class same यही equation था. Okay, अगर इसको rearrange करके लिखें 2x square plus 14x minus 120 is equal to 0. I can take 2 as common, so the remaining part will be x square plus 7x minus 60 is equal to 0. Okay, 2 को वहाँ पे ले जाएं तो 0 हो जाएगा, so x square plus 7x minus 60 will be equal to 0. This is the quadratic equation जिसको solve करना है, और x का वैल्यू जो आएगा that will be distance of the pole from gate B. So now I have to solve this quadratic equation. X square plus 7x minus 60, x square plus 7x minus 60 is equal to 0. 60 को अगर ब्रेक डाउन करें 2 पार्ट्स में, जिसका डिफरेंस आना चाहिए 7. ओके, इट विल बी 12 and 5. यस, दोनों के बीच का डिफरेंस आना चाहिए 7. क्यों डिफरेंस? क्योंकि 60 का जो साइन है वो माइनस है, सो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x. दोनों का डिफरेंस क्या है? 7 है. माइनस 60 इज इक्वल टू 0. सो x अगर कॉमन यहाँ से x प्लस 12 आएगा, माइनस 5 अगर कॉमन यहाँ से अगेन x प्लस 12 आएगा. ओके, x प्लस 12, x प्लस 12, इसी को कॉमन लेते हैं अभी. यहाँ पे जो बचा वहाँ पे x, यहाँ पे जो बचा 5 इज इक्वल टू 0. सो x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, या फिर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. x का वैल्यू आएगा माइनस 12, x का वैल्यू आएगा 5. नाउ द थिंग इज दैट we can take positive value as this is the distance. We cannot take this negative value. क्योंकि negative value हम लोग नहीं ले सकते किसी distance को लेके. So the x which was the distance of pole B from point B, ये जो distance था, that will be, what was the value? That will be 5 meter. So pole P का जो distance था from B, that will be, P का जो था from B, it will be 5 meter, and P का जो था A के साथ, that will be 5 plus 7, that is 5 plus 7, it will be 12 meter. Okay, let me write it properly. Distance of pole P from gate B is 5 meter, and distance of pole P from gate A is 5 plus 7, 12 meter. Okay, so that's it. This is the answer. Find the discriminant of the equation this, and hence find the nature of its root. Find them if they are real. Okay, so first of all, let me write the value of A, B and C. What is the value of A? 3, B का वैल्यू -2 and C का वैल्यू 1/3. इन दिस सिचुएशन फैक्टराइजेशन में हम लोग 1/3 नहीं रखते, बट यहाँ पे श्रीधराचार्य फॉर्मूला में, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में 1/3 रख के हम लोग काम कर सकते हैं. So let's do it. First of all, I have to decide कि जो रूट्स उसका नेचर क्या है. So b square minus 4ac minus 2 का स्क्वायर minus 4 into 3 into 1/3 minus 2 into minus 2 4 minus ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 0 आ जाएगा. As d का वैल्यू 0 आ रहा है, you tell me what should be the nature of the roots. Same and real roots. Okay, now if they are real, I have to find it. So let me find. कैसे फाइंड करते हैं? श्रीधराचार्य फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a. ओके, सो माइनस बी, व्हाट वाज द बी? -2 प्लस माइनस रूट डी, डी का वैल्यू 0 निकाल ले. ये जो इक्वल टू है, ऑलवेज राइट इट इन बिटवीन द फ्रैक्शन. ओके, सो 2 into what is the value of a? 3.
So minus minus plus, it will be 2 plus minus 0, 0 square root 0 0 ही आएगा, and this is 6. So basically अगर इसको लिखें हम लोग 2 plus 0 by 6, दूसरा रूट आएगा 2 minus 0 by 6. So it does not depend, दोनों सेम ही आएगा, 2 by 6 2 by 6. इसको सिंप्लीफाई करें तो x का वैल्यू आएगा 1 by 3 एंड 1 by 3. ओके, सी दोनों सेम ही है, जो हम लोग पहले डिसाइड कर चुके थे बिफोर सॉल्विंग, सेम एंड रियल रूट्स, हम लोग का आंसर भी वही मिला. Now these are some practice questions you can practice at home. Let us solve some of these questions, not all of them, and rest of the questions you have to solve it on your own. Okay, so practice this at home at your own time. X square minus 7x plus 12. Suppose if I want to solve the first question, the equation is x square minus 7x plus 12 is equal to 0. So let me first find d. D is equal to b square minus 4ac. B square minus 7 का square 49 minus 4 into a into c. So 49 minus 12 fours are 48. It is 1. Now let me find the value of x, that is minus b plus minus root d by 2a. Minus b minus 7 plus minus root d का वैल्यू है 1 divided by 2 into 1. So 7 plus minus 1 by 2. So 1 will be 8 by 2, another will be 6 by 2. So one will be 4, another will be 3. So these two are the roots of this quadratic equations. Okay, rest of the questions you can try at home. अगर कोई question नहीं बनता है, you can comment it down. I'll solve it in the upcoming classes. So that's it for today. Today's class we discussed about quadratic formula, the Sridharacharya formula, also nature of roots. We solved some of the NCERT examples, and there are some practice questions for you. I solved just one question. Rest of the questions you have to try it on your own. In the next class, we are going to start the exercise. Most probably it is 4.3, the third exercise of this chapter. So that's it for today. For more videos like this, subscribe to Prime Classes and press the bell icon to stay updated.